Yeah, good evening to all of you. Am I audible, visible? Jain sir, audible and visible, clear. Yes, sir. So, how are you? Fine sir. How are you Good guys? evening, How sir. are you? Doing good, sir. ठीक चल रहा तुम लोग? Are you guys happy? Yes sir. very रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, सर. क्या नहीं आ रहा? रिजल्ट सर CDS का, सर. आ जाएगा. इसको तो आना ही है. अपने घर थोड़ी रख लेंगे यूपीएससी वाले. सर इस हफ्ते आ जाएगा शायद. आ जाएगा. एनडी का आ गया ना, तुम्हारे भी आ जाएगा. रिजल्ट भी आ जाएगा. तुम लोग ज्वाइनिंग भी आ जाएगा. सब तुम लोग आगे की तैयारी शुरू करो ना. उसके वेट रिजल्ट आना ले जाना तुम लोगों के हाथ में नहीं है ना. सिलेक्शन देना तुम्हारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है. सो ओनली फोकस ऑन द वर्क. ठीक है जी. सो जैसे मैंने पूछा, आर यू गाइस हैप्पी? बताओ, आर यू Yes, हैप्पी? sir. Yes, sir. Yes sir. You should be happy always. You should be happy always. चलो जी. ठीक लग रहा है तुम लोग को? क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही हो? उसका देखो वो हो गया है जो तुम लोगों का वो आ रहा था ना एनोटेशन से, उसके सारे डिमांड तो हम लोगों ने वो सेटिंग कर दी है. आज से यू विल गेट बोथ द पीडीएफ्स. एक सिंपल वाली जो आपका स्टडी मटेरियल होता है विदाउट एनोटेशंस एंड विद एनोटेशंस बोथ. ठीक है जी. सो आज से वो ऑटोमेटिक हो गया, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है जी. एवरी सब्जेक्ट की मिलेगी? नहीं मैथ की मिलेगी. मैथ की तो मैथ की नीड होगी. रीजनिंग जी यस सर. उसका तो पढ़ोगे, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. ठीक है जी. यस सर. ठीक है, ये हो गया. बाकी सब कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए. ठीक है ना. इसकी एक मैं हमारे पास आई थी फॉर द मैथ्स. ठीक है जी. तो ये आपका करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट का टाइम टेबल चल रहा है. इंग्लिश भी स्टार्ट हो गई इसमें स्पॉटिंग एरर्स. इसमें मैथ्स 3 बजे, जीके 5 बजे इंग्लिश 6. सो बेसिकली we are not left with any concepts regarding the time. We are only left with the practice questions. ठीक है ना. So and the most important thing is that you have to practice a lot. That's how the things will. ठीक है. PDF में आंसर मेंशन होंगे. हाँ, of course PDF में तो आंसर होते हैं. ये किसी ने डाउट डाला है, इसको ना आप डाउट बॉक्स वाले क्वेश्चंस विद इन 24 आवर्स भी ट्राई क्यों हो जाते हैं. जिन्होंने डाले हैं उनके हो भी गए. आप डालिए तो सही. जब तक डालोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा. और डाल तो वो हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है. बहुत सारे आते रहते हैं ना, तो करते रहते हैं. विद इन 24 आवर्स दे गेट दे विल बी. हेलो सर. हाँ जी. हेलो. हाँ सर, क्लास के डिस्कशन बॉक्स में. नहीं, डिस्कशन बॉक्स तो क्या है. डिस्कशन बॉक्स का तो क्वेरी आपने पूछा है, बट आई विल सॉल्व इट इन द लास्ट ऑफ द क्लास. और जब क्लास के इंस्टेड ऑफ अ डिस्कशन बॉक्स है, यू पुट इट इन द डिस्कशन बॉक्स ऑफ द चैट बॉक्स, द क्वेरी बॉक्स. आई होप यू आर अवेयर व्हाट आई एम डूइंग. There's another. I will show you. I will show you as a man. ओके सर, थैंक यू सर. तो मेरा हो गया 24 घंटे से कम. हाँ, वो हो जाता है, उसकी कोई बात. तुम लोगों की क्वेरी के लिए हम यहाँ बैठे हैं. किस लिए बैठे हैं? हमारा कोई काम नहीं. वी आर ओनली हियर टू सर्व. ठीक है जी. चलो जी. फर्स्ट क्वेश्चन. 2 workers A and B working together complete a job in 5 days. A and B complete a job in 5 days. A work twice. सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा शिफ्ट चलती होगी. आप पढ़ो तो सही. हम एक्स्ट्रा क्या डबल ट्रिपल भी करा. ठीक है ना. उन सब टेंशन तो मत लो. ठीक है. एक्स्ट्रा शिफ्ट एक्स्ट्रा. We are okay with the rules and regulations. A worked twice as efficiently as he actually did, and B worked 1/3 as efficiently as he actually did. अच्छा, देखो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, आप देखना. If the work would have completed in 3 days, suppose the efficiency of A is A, efficiency of B is B. If A worked twice as efficiently as he actually did, suppose efficiency of A is A, efficiency of B is B. They both work together. A plus B work together for 5 days. For 5 days.
तो इतना वर्क हो जाएगा ए एफिशिएंसी से बी एफिशिएंसी से. If A worked twice as efficiently as he actually did, twice efficiency, and B worked thrice as efficiently, means B की efficiency 1/3. The work would have completed in 3 days. Into 3 कर दो बस. तो ये भी तो सेम वर्क ही करेंगे. Work is same for both the conditions. If A is doing with A plus B and double of A plus B by 3. Now you have to just compare with the conditions of this one. So 5A plus 5B, it would be equal to 3 to the 6A plus B हो जाएगा. So it would be A and it would be here, it would be 4B. So A upon B efficiency is what? 4 upon B is here. So efficiency of A is 4, efficiency of B is 1. Efficiency of A is 4, efficiency of B is 1. 5 plus 4 plus 1, 5. 5 5s are 25. So how much is the total work? 25. What is the time taken? 25 work total you are doing by A. A की efficiency कितनी है? 4. So 25 by 4 would be 6 whole 1 by 4. समझे तुम लोग? Got it or not? चलो सर बोलो. वो 25 वाला एक बार बताएंगे वो जो If I, अगर उसने अपनी एफिशिएंसी डबल कर दी, if अगर उसने एफिशिएंसी डबल कर दी, उसने अपनी एफिशिएंसी थ्राइस कर दी, 3 गुना कम कर. ठीक है जी. बाकी सब तो सेम, वही सब एफिशिएंसी निकाल लो बस और कंपेयर करो. ओके सर. A contract is to be completed in 46 days and 117 men were set to work, each working 8 hours a day. After 3 days, after 33 days, 4 by 7 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time, each man now working 9 hours a day? करा करो तुम लोग भी. मैं 1-2 सेकंड रुकता इसमें ताकि तुम लोग भी सोच सको, so that you guys can also think कि क्या करना है, कैसे करा जा सकता. A contract is to be completed in 46 days by, and this work men were employed working 8 hours a day. After 33 days, means 117 men 33 days तक काम करते रहे. Men in 2 days. 4 by 7 of the work is completed. 4 by 7 वर्क हो चुका है. अगर टोटल वर्क 4 by 7 जितना भी था उसको 4 by 7 हो चुका है. Work is always in the denominator. How many additional men may be employed? 117 already was there. How many more men need to be employed so that the work may be completed in time? देखो 33 days passed away. Total days कितने थे? 46. So कितने days बचे रह गए? 13 days. So 13 days, how many days? Sorry, how many hours they are working? 9 hours. Remaining work कितना है? Remaining work कितना है? 4 by 7 हो चुका है. 3 by 7 would be remaining. और ये लोग स्टार्टिंग में 8 hours a day वर्क करते. अब फिर से सुन लो पूरी बात. Men, days, hours और work. 170 men were worked for 33 days. 4 by 7 were completed by working 8 hours a day. 117 men were already there. How many more men I employ so that they working 9 hours a day, complete the work in remaining days of 13. Work left is 3 by 7. कुछ बचा पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं. अब बस इसको सॉल्व करना है, बाकी सब तो आप लोगों के हाथ में. देखो जी, 7 से 7 कट गया, 3 से ये 3 पे कट गया, और ये 4 से 2 पे कट गया, ये 3 से 11 पे कट गया,
और 13 से ये 9, 11 से ये गया 11 2 जा 22, 22 से आप इसको करेंगे 9 पर, 22 9 से कितना होता है 198, 198 minus 117 is equals to x, 81 is equals to x. A and B can do a piece of work in this stage respectively. They begin हाँ जी, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तुम लोग के साथ या मेरे साथ ही हुआ है? हम यहीं पे सर. तुम यहीं थे? Yes, sir. सब लोग. Yes, sir. हाँ चलो 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 जी देखो, मेरे साथ वाईफाई तो मुझे शुरू। हाँ तो क्या थे हम लोग, ए इतने दिन में एफिशिएंसी आ गई. सो नाउ दे बिगिन वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज. सो फॉर ए प्लस बी वर्क फॉर सम एक्स डेज, ए प्लस बी वर्क फॉर सम एक्स डेज and B finish the remaining work in 25 days. B ना आखिरकार 5 efficiencies से करता रहा. B work for 25 days and the total work will be equal to 1. B 5 into 25, 120. 6 plus 5, 11 into x, 125. It would be 180. 180 से जाएगा तो ये कितना बचेगा आपको? ये बचेगा कितना आपको? 55 ना. और 11x, x would be 5. 5 डेज तक ये लोग दोनों मिलकर काम करते रहे थे. फिर B चला गया, सॉरी A चला गया. 11 B ने अपना
कर दिया काम। चलो, Josh takes 8 hours to copy a 50-page manuscript, while Sonia can copy the same manuscript in 6 hours. How many hours would it take them to copy a 100-page manuscript if they work together? चलो देखो, यानी कि जॉर्ज एंड सोनिया, George can do it in 8 hours, in 6 hours. यहाँ पे आप लो 24, बता दो, यहाँ पर लो 3, यहाँ पर आ जाएगा 4. Time taken for 24 would be for 24 pages would be 24 divided by 3 plus 7. समझे? बट यहाँ पर उसने हमें 100 पेजेस दिए, 50 पेजेस का कंडीशन दी थी 8 और 6, और पूछा था डबल पेजेस का. They had asked for the double pages. Now what is my imaginary work? I will also make it double. 48 divided by 7. So it would be 6 whole 6 by 7. Why I had doubled it? Because 8 and 6 hours were given for 50 pages and they asked for 100 pages. They doubled the pages. So similarly, what is my imaginary work? Also, I also have to double. 7 कैसा है? 3 plus 4 7. Efficiency 3 plus 4 7. A plus B दोनों से पूछा है ना? They work together. They work together. Next. In an army camp, ration is available for 100 soldiers for 10 days. After 2 days, 60 soldiers join. Then for how many more days will the remaining ration last? नहीं 4 ही तो था ये, 3 plus 4. चलो. In an army camp, ration is available for 100 soldiers, and for 10 days. After 2 days, 60 soldiers join. Then for how many days ration lost? आर्मी कैंप में 100 सोल्जर 10 दिन तक कोई खाना खा सकते थे. मतलब सोल्जर राशन was enough for 100 soldiers for 10 days. After 2 days, आप सुनना यहाँ की, अब जो आपके पास राशन अवेलेबल है, what is the quantity of ration available for you is 10, not 10, sorry. It would be 10 minus 2 days. That is, it would last for 8 days. Imagine करो, आपने कोई ये राशन खाना शुरू करा, 2 दिन तक खा लिया, तो जो बचा हुआ राशन है, what is remaining ration, it would last for 8 days. What my point? अब यहाँ से आगे सुनो. तो जो राशन 100 soldiers 8 days तक खा सकते थे, अब 2 दिन के बाद, after 2 days, number of soldiers is 100 plus 60, that is 160. So वही राशन 160 soldiers कितने दिन तक कंज्यूम करें? ठीक है जी. सो सिंपल है, काट दो बस. 8 और 5 days. A is 40% more efficient than B. C is 20% less efficient than C. देख रहे हो ये मोर वाला 20% more, ये परसेंटेज में भी था, ये प्रॉफिट लॉस में भी था, ये एसडीटी में भी था, ये मैथ टाइम एंड वर्क में भी है, ये एसआईसीआई में भी रहेगा, ये हर जगह रहता है, ये एंगल्स में भी रहता है. सो व्हाट टेक्निक आई हैड टोल्ड यू, आपको याद रखनी पड़ेगी कि 40% is 2 by 5, so 5 and 2 plus 2, 5 plus 2, 7. That. And C is 20% less efficient than, देखो A to B का निकाल लो आप रेशियो. A 40% is 2 by 5. 5 plus 2, 7. ठीक है जी. 40% more efficient than, so 5 plus 2, 7.
C is 20% less efficient than C is 20% less. 20% is less जा रहा है तो माइनस का बन जाता है. Less efficient than C. 5 minus 1 4. ठीक है जी. C is less efficient than B है ना. So 5 minus 1 4. 20% less efficient than B minus 5 minus 1. ठीक है. Now 5 देखो ये same है. 5 is same on both the sides. So efficiency of A is to B is to C is what? 7 is to 5 is to 4. Working together, they can finish a work in 5 days. So work would be A efficiency plus B efficiency plus C efficiency into 5. That is 7 plus 5 12 और कितना हो गया 7 12 4 16. 16 into 5, that is total work is 18. They are asking in how many days A alone completes 70% of the work. So 70% of the work would be 70% of the work completed by A alone. A की efficiency होगी 7. So बस कट गया सब कुछ 7 से 7 8 days are. पूछो जी. सर इन क्वेश्चंस में एक कंफ्यूजन है सर कि समटाइम्स आई हैव सीन कि जैसे 40% 2/5 है तो आप डायरेक्ट लाइक 2:5 लिख देते हो, लेकिन समटाइम्स यू लाइक हाँ वो अगर मैं बोलूं इंग्लिश, अगर मैं बोलता हूं कि A is 40% efficient of B, सुनना बहुत ध्यान से, और A is 40% more efficient than B. Got my point? ये 40 B का 40% है और ये 40% ज्यादा है. तो अगर मैं B को ये 40% लिख लूं 2/5, तो आप इस कंडीशन में लोगे 2:5 because A is 40% efficient and here it is 40% more efficient, that is plus 2/5, that is it would be 5 plus 7. आप इसको ऐसे समझ सकते हो, B की अगर एफिशिएंसी 100 है, सो A की 40%, इसका 40%. B efficiency is 100, A is more 40%, so plus 40 would be 140. इसको काटोगे 7:5 आएगा, इसको काटोगे 2:5. गॉट इट सर, गॉट इट. यस सर, थैंक यू सर. इंग्लिश वो इंग्लिश है कि वो उसका 40% और सिर्फ 40%. चलो, A can do 50% more work than B in the same time. B alone can do a piece of work in this. B starts working and had already worked for 12 hours. When A joins him, how many hours should B and A work together? Chalo. A can do 50% more work than B. A B से 50% काम ज्यादा कर सकता है. सुनना जरा, 50% ज्यादा का मतलब ये 2 है, ये 3 है. ठीक है ना. ऐसे भी मान सकते हो 150 A is to B 3 is to B. सुनना, A can do 50% more work than B. ये इससे इतना काम ज्यादा कर सकते हैं, इनके वर्क का रेशियो, और यू कैन से इट इज एफिशिएंसी का रेशियो. मोर द वर्क more the efficiency, more the work. B alone can do a piece of work in 30 hours. Up. B starts working and had already worked for 12 hours when A joins him. How many hours should B and A work together? B alone can do a piece of work in 30 hours. Time का रेशियो निकालना है यहाँ से. It would be 2:3. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं. फिर ऊपर बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके. B starts working and had already worked for 12 hours. आपको पहले what you need basically is total work. Efficiency of B is to in how many hours he can complete the work. Efficiency into time.
he worked with efficiency of 2. He worked for 30 hours. So total work is 60. Option B starts working for 12 hours. और B ने अगर 2 की efficiency से with the efficiency of 2 he worked for 12 hours. That means 24 work has completed. Remaining work is 36. When A joins him, remaining work is 36. How many hours should B and A work together? Now time is there. 36 work needs to be done. It needs to be done combined with A and B. That is 3 plus 2, 5. So 5 से काटोगे, 5 sevens 35, 7.6. Got my point? Next. A can do a piece of work in this days, while B alone can do it in this. They work 5 days. The rest of the work done by the C in 2 days. They got 2 pieces for the whole work. How should they divide the money? A can do a piece of work 10 days, while B alone can do it in 15 days. They work together for 5 days. हाँ जी, सुनिए अब जरा देखो, जो पैसा मिलता है, किस चीज का पैसा मिलता है आप लोगों को बताओ? फॉर व्हाट यू गेट मनी? मतलब लाइफ इन कॉमन सेंस की बात बताओ मेरे को। फॉर व्हाट यू गेट मनी? काम करने। एग्जैक्टली। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, है ना? यस सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हुई, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। इफ यू वर्क फॉर whatever hours, you will get a money according. ठीक है ना? A can do a piece of work in 10 days. B alone can do the work in 15 days. Suppose the work is 30. If he worked alone, efficiency would be 3. Efficiency would be. They work together for 5 days. A plus B worked for 5 days. That is 3 plus 2 into 5. 5 5 is 25 work. ठीक है जी। अब सुनना पूरी बात। आपको यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द ए इज टू रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द बी रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द सी। क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि इसने इतना काम करा, इसने इतना काम करा, इसने इतना करा। वर्क का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेजेस के। मैंने अभी बताया, आप जितना काम करोगे उतने आपको वेजेस मिलेगा। ठीक है ना? वर्क is directly proportional to wages. So अब देखो, इस A ने अपनी 3 एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करा, B ने अपनी 2 एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करा, C rest of the work done by the C in 2 days. रेस्ट वर्क करा किसने? रिमेनिंग वर्क है कितना? 30 minus 25, that is 5 is the remaining work. टोटल स्टार्टिंग के 5 दिनों में तो इन्होंने करा था ना। सो 5 3 is 15, 2 5 is 10, 5 1 is 5. रेशियो काटोगे तो 3:2:1. दिस इज योर रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द ए बी एंड सी। पैसा भी इसी रेशियो में बटा हुआ इन सब में। आप चाहो तो रेशियो से भी देख सकते थे कि किस किस में 3:1 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3:1 आ जाएगा रेशियो। 7 से काटोगे तो, है ना? किसी और में 3:1 आ ही नहीं रहा। A part आंसर। वैसे क्या कर तरीका क्या होता है इसका सुनना। Since this is the ratio of their work, this would be the ratio of their wages also. So the ratio of the wages would be 3:2:2. What is the ratio? बस देखो, 3 + 2 5 और 6, 6 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 450 divided by 6, 1 की वैल्यू 450 divided by 6, that is 75. 75 into 2 150, 75 into 3 225. चलो, A and B are 2 taps which can fill a tank individually in 10 minutes, 20 minutes.
respectively. However, there is a leakage at the bottom which can empty a full tank in 40 minutes. If the tank is empty initially, how much time will both the taps take to fill the tap leakage? So A and B can fill a tap in 10 minutes, 20 minutes. There is a leakage at the bottom. ये कर सकता है 40 minutes. 40 work मान लो plus 4 because it is filling the tank. Plus 2 it is filling the tank. Minus 1 because it is emptying the tank. ठीक है ना, empty. If the tank is empty initially, how much time will it take to fill? Time क्या हो गया? Work upon efficiency. 40 upon 4 plus 2 6 6 minus 1 ऐसे चलेगा ये 6 minus 1 5 5 से काटोगे 8. A certain number of persons can complete a work in 34 days, working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining persons work the work? Certain number of persons, suppose X persons, can complete a work in 34 days, working 9 hours a day. If the number of persons is decreased by 40%, उसको 40% by 40% decrease करा, by 40% decrease करा है, तो उसको बना दिया गया है 60%, 60% of X. This is the number of persons working. How many hours a day? Hours a day complete the work in 51 days. 60% of the X क्या हो गया? 3/5. 3/5 of the X. So X कट गया. 17 दूनी 34, 17 3 क्या? 3 3 9. 5 को उधर भेज दोगे 2 5 10 hours. Efficiency of P is twice that of Q, whereas the efficiency of P and Q together is 3 times that of R. If P, Q, and R work together on a job, in what ratio should they share their work? Efficiency of P is twice that of Q, whereas the efficiency of P is 3 times that of R. 3 times that of R. The efficiency of P is 2. And the P and Q together, 8 seconds. 8 seconds. बहुत अच्छा वाला सवाल है. Efficiency of P is twice that of R. Whereas the efficiency of P and Q together, that is efficiency of P plus Q, is 3 times that of R. Is 3 times that of R. समझे? If P, Q, R work together on a job, what ratio? अब देखना है यहाँ पे देखो P की वो क्या है 2 है, Q की क्या है 1. यहाँ पे 3 कैसा आया होगा 2 plus 1. So efficiency of P is 2, efficiency of Q is 1, efficiency of R is 2. So efficiency of P is to Q is to R is 2 is to 1 is to. In what ratio should they share their earnings?
जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होगी, क्योंकि जितनी एफिशिएंसी होगी उतना उनका वर्क होगा। अगर सेम डेज के लिए कर रहे हैं, इसमें अलग अलग डेज के लिए नहीं कहा गया, अगर अलग अलग डेज के लिए करते so their work will be different, so their wages or their earning will also in the same ratio, 2:1. Two men, one woman can complete a work in 14 days. Two men, one woman can complete a work in 14 days. While four women, two men can do the same work in 8 days. If a man gets rupees 90 per day, what should be the wages per day of work? Two men, one woman can complete a piece of work in 14 days. Four women, two men can complete a piece of work in 8 days. If a man gets rupees 90 per day, तो भैया देखो जिसकी जितनी एफिशिएंसी होता है उतना वेजेस, 14 2 are 28 men, 14 W, 8 4 are 32 W, तो वुमेन ही आता है, and 8 2 are 16 men. 4 यहाँ पे देखना जरा, इसको इधर ले जाओगे, 28 minus 16, 12, 12 M, 32 minus 14, 16 और 2, so M is upon W is 3 upon, ठीक है जी, इसको काटोगे। So this is the ratio of their efficiency. Here we take M and W are the efficiency of men and women. Efficiency का ratio is 3:2. So this would be the ratio of their wages also, 3:2. Men gets rupees 90 per day. That is value of 3 is 90. It would be 3 into 30. 2 into 30 is 60 days. 60. P and Q together can do a job in 6 days. Q and R can do a job in 6 days. By 7 days, P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days. Find the difference of in which R and P can what question for the answers. P and Q together can do a job in 6 days. Q and R can do a job in 60 by 7 days. Multiply with the 7. So you will get it 7 6 of 42. It will be 6 days. P started the work and worked for 3 days. अब पहले यहाँ पर you have to find something. 42 से क्या जाएगा? 5 6 30 180 240 नहीं जाएगा, क्योंकि 7 6 है ना, एलसीएम निकालोगे तो 7 6 यहाँ निकालोगे तो 6 10 10 का आएगा ना, आएगा 15 और 4 15 4 15 4 4 का कैसा आता है 2 का स्क्वायर, 15 आता है 3, एलसीएम वुड बी 3 में आ गया 2 का स्क्वायर 3 into 5 into 7. This would be our LCM. 4 थी है 12 12 पंजे 60 और 20. Efficiency would be 10. Efficiency would be 7. But यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करी थी ना, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है. 70 7 7 is 40. Got my point? Why I multiplied with 7? कल मैंने पूरा brief करा, because we had multiplied in the starting. So we have to multiply it there also. P started the work and worked for 3 days. यहाँ पर similarly यहाँ पर भी 7 multiply करनी. तो मेरी बात मुझे सुना रहे. So P started the work and worked for 3 days. P की efficiency पता नहीं क्या है. Q and R continued for 6 days. Q and R की efficiency we know. Q and R efficiency is 49.
49. Then the difference of days in which R and P can complete. तो पहले तो आप यहाँ पे निकाल लो ना, 49 into 6 टोटल आ जाएगा 420. देखो P ने कुछ एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करा, इन्होंने Q plus R 49 की एफिशिएंसी से 6 डेज तक काम करा. 6 9 are 54, 6 5 4 are 24, 24 plus 5 29. तो ये आ जाएगा 220 और 6, 220 और 6 226. सो पी की एफिशिएंसी आ गई 220 और 6 आएगा, नहीं 120 और 6, it would be 126. सो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 4 are 12, 43, 42 sorry, 3 2 6 7 4. So efficiency of P plus Q is what? 70, in which efficiency of P is 42. So efficiency of Q would be what? 42 plus 38, 28. Efficiency of Q plus R is what? 49. Q की efficiency 29 या 49 पे पहुंच 28. यहाँ पे कितना जाएगा, R की efficiency 20. R की efficiency 20. समझे बात को यहाँ तक या नहीं समझे? बहुत मुश्किल है. It's not so much difficult. Just you have to keep yourself calm throughout the process. Throughout the process, you have to keep yourself calm. Otherwise, things will not work out. सर इतनी लेंथी कैलकुलेशन थोड़ी आती होगी एग्जाम में. आने को आ सकती है. ये जो इसने R and P पूछा ना, यहाँ पे इसने अपना आपको थोड़ा सा टेस्ट करा, मतलब इसको लेंथी बना दिया. अदरवाइज आने को आज भी जाती है भाई, नहीं भी आती, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में. ठीक है ना. बस अब आपसे पूछे कि वो आप बोलो आए तो स्किप कर दे फिर तो सर. ऐसा देखो, इट्स नॉट एवरी टाइम नेसेसरी. इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में स्किप कर सकते हैं, एंड में कर लीजिए. ठीक है जी, चलो जी. क्योंकि ऐसा होता है ना, इतनी एफर्ट करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आता है ना, तो ज्यादा दुख होता है. ठीक है ना. एंड इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि ना आए. ठीक है ना, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है. सो इट्स नॉट अ थिंग कि आप हर बार ले ही आओगे उसको पूरा. तो स्किप करने वाली एकदम कोई बात नहीं होती है. बाकी आप लोग रखेंगे अपना आप मोटिवेटेड. ये मैंने कहा ना, दीज आर नॉट द एग्जाम्स ऑफ द नॉलेज. क्या है, ये सबको पता है सब नॉलेज. दीज आर द एग्जाम्स टू टेस्ट योर पेशेंस. ये सारे एग्जाम CDS AFCAT SSC, ज्यादातर ये सारे ये नॉलेज नहीं टेस्ट करते. गेट के एग्जाम आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा, कैट का एग्जाम आपकी ज्यादा नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा. ये आपकी पेशेंस लेवल को टेस्ट करेगा. हाउ मच इज यू हैव अ पेशेंस. कैट जैम वैम ये जो एग्जाम होते हैं, दे आर द टेस्ट नॉलेज. दे टेस्ट योर पेशेंस, हाउ मच पेशेंस. ठीक है ना. अब क्या पूछा, R and P का डिफरेंस पूछा. तो R and P की एफिशिएंसी का कितना डिफरेंस है, 21. अब 21 को यहाँ पे लेके जाओ, 21 डिवाइडेड बाय दिस, इट वुड बी 20 days. बट उसका हाफ करना पड़ेगा क्योंकि हमने सब जगह हाफ करा. दैट इज डिवाइडेड बाय 10 days का डिफरेंस है, इट वुड बी 6. ठीक है जी. सो थोड़ा सा देखो, मैं बताता हूँ जरा आपको एक्चुअली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, थोड़ा सा वो ये रखना पड़ता है पेशेंस. मैं आपको फिर से ब्रीफ कर दूं. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन फाइंडिंग द एफिशिएंसी. जस्ट हैव टू फोकस ऑन फाइंडिंग द एफिशिएंसी. व्हाटएवर इज द एफिशिएंसी यू हैव टू वर्क. चलो, नहीं आती ज्यादातर ऐसी कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा ये आती है ना, तो ऐसे में 2 से 3 सवाल आते हैं. ठीक है ना. डोंट. ABC can do a work in this days. They start the work together, but be leaving off 8 days and 6 days before the completion. इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुनना, ये 16 दिन में, ये 32 दिन में, और ये 48 दिन. ये जाएगा 96 पर. 16 6 96 और 16 30 और 16 दिन 48 दिन. अब देखिए, सपोज वर्क कंप्लीटेड इन X days. So they completed the work in this off days and the 6 days for the completion. A
थ्रू आउट द वर्क करेगा, इट विल वर्क थ्रू आउट द x days. B leaving of 8 days, leaving of 8 days, and C 6 days before the completion of the leaving of 8 days, मतलब 8 दिन बाद वो चलेगा, 8 दिन काम करे चलेगा. C ने कितना काम करा, लीविंग ए 6 days बिफोर द कंप्लीशन. अगर x डेज में हो रहा है तो ये 6 days पहले चला, मींस इसने x minus 6 days काम. टोटल वर्क दे आर डूइंग 9 days. Efficiency of A is 6. Efficiency of B is 3, 3 8s are 24. Efficiency of C is 2, x minus 6. 2x, 2 6 are 12, 96. 6x plus 24. 6 2 6 और 2 8, ये 12 आ गया यहाँ पर. 96 और 12 108. 108 से काटोगे सो टू बी 1, नहीं 12 से 8 हो जाएगा सर, माइनस होगा 84 होगा ना. सो 84 से आ जाएगा, 84 तो घटेगा. 6 6 2 8 प्लस 12 माइनस 6. लिविंग ऑफ, अच्छा सॉरी, ये भी तो 8 days जाएगा. लिविंग ऑफ 8 days, लिविंग ऑफ 8 days मतलब ऑफ 8 days. ये ना बहुत गंदी इंग्लिश लिख के देते हैं, सिंपल नहीं लिख सकते थे. C6 ऑल्सो लाइक दिस, जैसे लिख के दिया, मतलब अगर x 8 days गया है, अगर a पूरा the work is completed in x days, so B also work x minus means 8 days earlier, that is x minus 8. B का भी x minus 8 चला जाएगा, तो B also work for x minus 8 days. आप कर लो इसको. So 6x यहाँ जाएगा 3 into x minus 8, जाएगा 2x minus 6, 3x 3 8 24, 2x 12 96. ये कितना आ गया 36, 96 6 और 5 11. तो ये आ जाएगा 36 into 6 कितना चला जाएगा, ये 6 6 12 और 9 और 4 13 130. 11x is equals to 132, x would be 12x. Sharp. The laborers A, B and C were given a contract of rupees 750 for doing a certain work, certain piece of work. All the three together can finish the work in 8 days. A and C together can do it in 12 days, while A and B together can do it in 10%. Money they will divide. आप लोग पता करें किसको कितना पैसा मिलना है. ठीक है जी, आप लोग का. This is the last question. This is the challenge. Tomorrow we will catch up with time and work class 3. This is all for today. See you in the next one. Thanks. Challenge. हेलो सर. हाँ जी बोलिए. हेलो सर, show me doubt section where I can post my doubt. अच्छा, doubt section. Yes sir. देखो इस तरीके का आपका बंडल विजिबल होता होगा. ऐसे लाइव क्लासेस का बंडल भी होता है. ठीक है ना. तो किसी भी क्लास की, वट एवर क्लास यू गो, बी इट लाइव और बी इट एनीवेयर, इसके ना नीचे यहाँ पे लर्न डिस्कशन होता है. तो यहाँ पर आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो और आपकी अटैच फाइल मतलब फोटो क्लिक करके भी लगा सकते हो इस तरीके से. व्हाट माय Okay sir. चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे.